हेलो हेलो शुरू करें पेन पेन आंगुल देखाने शुरू करो. Welcome again from BookmarksEducare. I am one of the math educator Arup Mukherjee. Today we are going to solve 10 questions of from section B for class 10 CBSE and 10 questions from B section for class ICSE. Okay, now let us start. First of all, we are going to solve 10 questions from section B for class 10 CBSE. Okay, so first question from section B is solve the following system of equations algebraically. 30x plus 44y is equal to 10, 40x plus 55y is equal to 13. So this is a simultaneous linear equation. So we are solving it with the help of method of elimination. Okay, so 30x plus 44y is equal to 10, 40x plus 55y is equal to 13. So according to method of eliminations, I am going to equate the coefficient of x. So I want to eliminate x from both the linear equations. So first of all, we have to equate the coefficient of x in both equations So equation number multiplying 4 and equation number 2 multiplying by 3. So 120 plus 120x (176y) is equal to 40. Number 3 equation, and multiplying by 3, equation number 2, we get 120 x plus 165 y is equal to 39, equation number Roman 4. So subtracting equation 2 or equation 4 from the equation 3. So x will be eliminated. So 1 is equal to 1. So value of y is equal to 1 by 11. Now putting y is equal to 1 by 11, either any equation of given two equation, number 1 or number 2. I am putting the value of y in equation number 1. So 30x plus 44 into, instead of y I am going to put 1 by 11 is equal to 10. So 30x is equal to 10 minus 4 हो जाएगा ये. So 4 is equal to 6. So x is equal to 6 by 30. So 1 by 5. So value of x is equal to 1 by 5 and value of y is equal to 1 by 11. This is the required answer. Okay. So now the next question from section B. Second question
from the section B for class 10 CBSE. So this is the sum from distance, well, height and distance. Okay, so height and distance, this sum belongs to height and distance. So a 1.5 meter tall boy is walking away from the base of a lamp post. This is the lamp post. Okay, so lamp post which is 12 centimeter high. So 12 centimeter, B, C, A, M, N. So let us assume BC is the height of the lamp post. So BC is equal to 12 meter, which is the height of the lamp post, and AM is the height of the boy, who is the height of 1.5 meter. Okay, this is 1.5 meter, and the speed of the boy is equal to 2.5 meter per second. So find the length of his shadow. I think the boy is walking away from the foot of the lamppost towards N. So the shadow of the face of the boy is towards N. So shadow must fall on the CM line towards C. So MN is the shadow. I think let us assume MN be the length of shadow of the boy, which is assumed as X meter. Okay, so distance CM. So the boy is walking from C to M. Then how much distance is covered by the boy? Okay, the speed of the boy is 2.5 meter per second, and time taken, here it is said that find the length of his shadow after 3 seconds. Matlab time elapsed 3 seconds. So distance is equal to speed into time. So speed into time at this meter. Okay, so distance from C to M, which is covered, the distance from C to M covered by the boy is 7.5 meter. Okay, now we are seeing that triangle BCA is a right angle triangle and triangle AMN is also right angle triangle. So these two right angle triangles are similar to each other. From which angle? From angle BCA, angle C is equal to angle in triangle BCN and in triangle AMN. So in triangle BCN, BCN, C is the right angle. So C right angle, as well as from triangle AMN, M is also right angle, that is M. Okay, now angle N is common. Angle N is present in both
angle BNC and angle ANC. So N is the common angle which is present in both triangle, both right angle triangle. So triangle BCN similar. This is a sign of similarity. Triangle AMN for angle axiom. Okay, according to angle axiom. So I can write, since these two triangles are similar, so their corresponding side ratio of their corresponding sides are equal. Ratio of their corresponding sides are equal because these two triangles are similar. So AB by, from this triangle AB by, from this triangle AMN by MN is equal to CN by MN. So AB मतलब 12 मीटर, AM मतलब 1.5, CN मतलब CM is 7.5 plus CM मतलब CM plus MN. So MN, which is assumed as X meter, by MN. MN is also X. So after cross multiplication, but we will get 12x So 12x minus 1.5x is equal to 11.25. So 12.0, 1.5, so 5. So x is equal to 11.25 by 10.5. So it's going on. So the value of the shadow, the length of the shadow made by the boy after 3 seconds is approximate 1.06. Okay.
Huh? Okay. Now third sum from section B for class 10 CBSE. A parallelogram ABCD. Let us draw a parallelogram A, B, C, D. ABCD is a parallelogram. Okay. So AD is produced a point E. So AB is produced point E, and BE and BE intersect CD at F. Okay. CE joining C which intersect AB at CD, okay, and at M. Suppose in a parallelogram ABCD, side AD is produced to a point C, and BE intersect CD, and BE intersect CD at F. DAB prove that triangle. I think this question is wrongly copied. Okay, a triangle होगा D होगा, and I think question must be ABCD is a parallelogram. DA is produced to E such that if I join CE, it meet AB at the point F. AB at the point F. So AB at the point F. I am telling again. Let us draw a parallelogram ABCD in which DA is produced to E. Now joining C and E which meet AB line at F point, and also and we have to prove that triangle ABE ABE, so joining BE, triangle ABE similar to triangle DCFB, CFB. Okay, so I am telling again, ABCD is a parallelogram. DA is produced to E. Now let us join E and C. So the line segment EC meet AB line of the parallelogram at the point F. Now joining EB. So after joining EB, we have to show that triangle ABE similar to triangle CFB. Triangle triangle ABE. Sorry, triangle DEC. I think DEC.
Okay, if I draw it like this, just change the naming. Triangle. A, B, C, D. AD is produced. Okay, so AD is produced. E, point E and BE intersect. BC intersect BE intersect CD at if. Okay, fine. So and okay, so triangle ABE, okay, triangle CFB, okay, okay, this is the, क्योंकि AD is produced, AD, the direction should be toward D. So from A to B, from A to T, and it's going on to onto the point E. So AD is produced or extended to E point. Now joining BE lines, joining B comma E points. So BE line segment intersect CD or DC line of the parallelogram at the point F. So we have to prove triangle ABE is similar to triangle CFB. So now it is easy to prove. First of all, triangle, from triangle, in triangle ABE, so angle E and triangle CFB, so angle AEB, alternate angle EB, EBC, more precisely you can write angle FBC, क्योंकि AE parallel to BC side. Okay, so since AE parallel to BC, so that is why two alternate angles is produced. One is angle E and other is angle B. So this angle is equal to this angle and they are both alternate angle to each other. So alternative angle to each other. So they must be equal. And other, this is equal to angle this is equal to angle this, angle DEAB is equal to angle FCB, क्योंकि opposite angle of a parallelogram, these two angles are opposite angle of parallelogram. So opposite angle in parallelogram must be equal to each other. Okay. So from according to angle axiom,
these two triangles should be similar to each other. So triangle ABE similar to triangle CFB according to angle axiom. Okay. So next sum, find the coordinate of point C which lies on the line AB produced such that AC is equal to twice of, so AC is equal to twice of BC. From this equation, from this relation, we can say that the point C divide the line segment AB externally. Okay, so the line segment AB is divided externally at point C at the ratio 2:1. So AB line is divided by the point C externally at the ratio 2:1. Okay, and the coordinates of A and B are given. Coordinate of A is -1, 7 and coordinate of B 4, -3. So from the section formula we can write coordinate of C ratio 2:1, 2 minus 1, 2 into x2, 2 into x2 matlab 4 minus 1 into x1 comma 2 into y2 minus 1 into y1 by 2 minus 1. So 4, 8, 8 minus plus 9, 9 by 1 minus 6 minus 7 minus 10 by 1. So 9 comma minus 10. So 9 comma minus 10 is the required coordinates of the point C. Okay. So what we have to find out? Now we are asked to find out the coordinates of the point C. So this is the required answer, which is the coordinates of point C. Next sum, find the value of x for which sin a plus cosec a whole square plus cos a minus plus sec a whole square is equal to x plus tan square a plus cot square a. This sum belongs to trigonometry. So a plus b whole square फॉर्मूला डाल देना पड़ेगा यहाँ पर. So sin square a plus cosec square a plus 2ab 2 into sin a into cosec a, as well as plus cos square a plus sec square a plus 2 into cos a into sec a is equal to x plus tan square a plus cot square a. So sin square a plus cos square a means 1. So 1, and cosec square a will be as it is, remain unchanged. So, plus sec square a is also remain unchanged.
प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 into sin A into cosec A. Cosec A is the reciprocal of sin A, so sin A is into cosec A means 1 by sin A, so sin A will be eliminated. So instead of sin A into cosec we can put 1, as well as 2 into 1 क्योंकि cos A sec x का reciprocal और sec से cos A का reciprocal, so it will be 1 x plus right hand side will be as it is, so 1 plus cosec square A, so कुछ नहीं लिख सकते हम, cosec square A मतलब 1 plus cot square A, ओके. प्लस 10 का फॉर्मूला क्या है ना, आइडेंटिटी का फॉर्मूला cosec square A is equal to 1 plus cot square A प्लस sec square A मतलब 1 plus tan square A, ओके. सो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, सो x प्लस tan square A plus cot square A. So from both sides cot A will be eliminated and tan A is also be eliminated from both sides, okay. So 1 plus 1 2, यहाँ पर 4 है, 2 plus 4 मतलब 6 is equal to x, so x का वैल्यू 6. सॉरी, यहाँ पर और भी एक 1 है प्लस 1, सो 7 हो गया 7, ओके. और एक 1 था हमको नजर नहीं आया इसलिए हम वाइप मैंने मतलब ओवरलुक कर गया, सो 1 है तो 1 plus 1 2 plus 3, 2 plus 1 मतलब 3, 3 plus 4 मतलब 7, so x is equal to 7. Another sum from section B for CBSE class 10. We have to evaluate this expression. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ऊपर 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या है हाफ, माइनस साइन 30 मतलब हाफ है, सो हाफ होल क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब 30 डिग्री है इसीलिए साइन 30 डिग्री का मतलब उसका वैल्यू हाफ है, उसका होल क्यूब मतलब हाफ होल क्यूब हाफ क्यूब, ओके. सो 3 by 2 minus 4 into 1 by 8, 1 by 2 होल क्यूब मतलब 1 by 8, सो 2 into 1 क्योंकि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो एलसीएम मतलब 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 3 minus 1 by 2, so 2 by 4 मतलब half, so half will be the required answer, okay. Next sum, 2 friends Anil and Ashraf were born in the December month in the year 2010. The probability that they share same date of birth. So in the year of 2010, the month is December, so 2010 and month is December, so in December month we can see there are 13 days, okay. So there are 13 days in a December month, so 2 friends Ashraf and Anil, so their birthday they could be born, Ashraf and Anil could be born in any
days of 31. So their birth date are equally likely. Okay, so their Ashraf could be born any days in the month of December out of 31 days, and as well as Anil could be born in the month in any days of 31. Okay, in any days of 31. So total possible outcome, that is meant the birth date pair of each. So the birth date pair of both are 31 into 31. Okay, so this is the birth date pair, okay, of both Anil and Ashraf. So this is the total possible outcome, that is meant sample space. And first number one question, they share same date of birth. So they share same date of birth. Matlab Anil could be born any day in the month of December in which there are 31 days. So, and Aslam must be born at that particular day on which Anil born. Okay, so the favorable outcome is 31. So probability of same date of birth is favorable outcome 31 by 31 into 31. So total sample space 31 into 31. So 31 will be eliminated from numerator and denominator. So the answer is 1 by 31. So 1 by 31 is the probability that they share same date of birth. Okay, and second question is they have different dates of birth. So they have different date of birth. Matlab the Anil birthday will not be same of Ashraf birthday. So their birthday are different. Okay, so in that case the probability of their birthday must be same is 1 by 13. So we have to subtract from 1. 1 is the total probability. So subtract from 1 by 31. So then we will get they have different dates of birth. Okay, so probability of different dates of birth is 1 minus सेम बर्थडे का दोनों का सेम ही बर्थडे होगा उसका प्रोबेबिलिटी है 1 by 31. सो 1 by 31 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 से. सो तब जाके हम लोगों को मिलेगा क्या ना दोनों का बर्थडे डिफरेंट है, अलग अलग डेट में दोनों का बर्थडे है. तो वही सो 31 minus 1 by 31 is equal to 30 by 31. Okay, so this is the required answer. Now the next sum is we have to prove that root 2 is an irrational number. Let us assume that root 2 is rational number. So if root 2 is rational number, then we can write root 2 in the form of P by Q, where P and Q are
co-prime number, मतलब they have no common factor other than 1. That is mean co-prime number. Co-numbers to each other and q not is equal to 0. अगर q 0 हो जाएगा तो ये undefined हो जाएगा. Okay, so let us assume that root 2 is rational number. So if root 2 is rational number, then root 2 can be written, any rational number can be written in the form p by q, where p and q are co-prime number. Co-prime number means p and q have no common factor other than 1. So and q not is equal to 0. So squaring on both sides is equal to 2. So p square is equal to 2q square. So p square is divisible by, so p square is divisible by 2. 2 is prime number. So p square is divisible by 2. Then p also divisible by 2. Okay. If p square divisible by prime number 2, then p is also divisible by 2. Okay. So p is the factor of 2. So let us assume p is equal to 2k and k for any integer. K stands for any integer. So putting 2k instead of p, 2k instead of p, so 2k whole square, 2q square, so 4k square is equal to 2q square is equal to q square is equal to 2k square. So q square by 2 is equal to k square. So q square is also divisible by the prime number 2. So q is also divisible by prime number 2. So both p and q are divisible by the prime number 2. So what we have seen that p and q have common factor 2 other than 1. So we are getting 2 common factor. 1 is also the factor, but more than 1 we are getting 2. So यहाँ पर root 2 so p and q are co-prime number. P and q are co-prime number, but we have seen that p and q both of them are divisible by 2. So what is co-prime number? We have assumed that p and q are co-prime number. Co-prime number means they have no common factor other than 1. So यहाँ पर एक से ज्यादा दो common factor हम लोग को मिल गया. So that contradicts our assumption. So p and q are divisible by 2 other than 1. So but यहाँ पर p and q are co-prime number, मतलब they have no common factor other than 1. This statement is contradicted by because p and q are prime number, but we have proved that p and q have common factor other than 2, that is 2. So our assumption is wrong. Okay. So root 2 is irrational number. Root 2 is irrational number. Okay. Let x and y be two distinct prime number. p, q and r का वैल्यू दिया हुआ है. So find HCF of PQ, P, Q and R. So HCF of P, Q and R is x y square. So कॉमन है दोनों, तीनों में x कॉमन है. ठीक है. लिस्ट पावर वाला जो है वही कॉमन होता है. यहाँ पर x है एंड y स्क्वायर
तीनों में ही है तो वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज द एचसीएफ. LCM of P, Q and R. तो highest power of x to the power 5, so x to the power 5 will be the LCM of x का जो पावर है उसमें से x to the power 5 होगा उसका LCM, एंड y का पावर ज्यादा है y to the power 4 होगा y का LCM, माने y क्यूब, y to the power 4 एंड y स्क्वायर. इस तीनों में तीनों का LCM होगा y to the power 4 जो जिसका पावर ज्यादा है. सो नाउ LCM into HCF. So x into this मतलब x to the power 6, y into y to the power 6. Okay, and product of the numbers p into q into r, x square y cube into x square y cube into x into y to the power 4 into x to the power 5 into y square. So x cube x to the power 8. अगर law of indices, from the law of indices power will be added if the bases are same and they are in the product form. So this is all about law of indices. Y cube into y to the power 4 मतलब y to the power 7 into y square y to the power 9. Okay, so further check, so find LCM and LCM. तो ये फर्स्ट आंसर निकल गया और सेकेंड आंसर भी हम लोग को मिल गया. सो अब बोला फर्दर चेक इफ HCF into LCM of of the given three numbers is the product of their. So here पर specially evidently we can see that these two expressions are not same. So we can write LCM into HCF is not equal to P into Q into R. Okay. The monthly income of two persons are in the ratio 9:7. Let us assume that two persons income of two persons are rupees income of first person is equal to rupees 9x. Income of second person rupees 7x, and their monthly expenditure are in the ratio. So expenditure of first person is rupees, let us assume 4y, sorry ये x पकड़ लिए तो 4y, and expenditure of second person is rupees 3y. So saving if each saved, so saving of first person income minus expenditure, income minus expenditure, sorry expenditure क्या होगा, income फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या है 9x एंड फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है 4y. So 9x minus 4y, this is the saving of first person, and saving of
second person, that is to rupees 7x, सेकेंड पर्सन का इनकम है 7x एंड एक्सपेंडिचर सेकेंड पर्सन का क्या है 3y, तो 7x माइनस 3y एंड दोनों का सेविंग ही सेम है 5000 है. सो वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन. सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x minus 4y is equal to 5000 and 7x minus 3y is also equal to 5000. So we have to solve this two linear equation, मतलब do simultaneous equation. So we use method of substitution with the help of method of elimination. We solve it with the help of method of elimination. Method of elimination. So number 1 equation and number 2 equation. So multiplying 1 by 3 and multiplying equation 2 by 4, क्योंकि हम लोग y का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, इक्वल ले आना मतलब सेम ले आएंगे, इसीलिए हम लोगों को y का कोएफिशिएंट सेम ले आना है. इसीलिए y मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है वो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को, एंड सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वही नंबर से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 27x minus 12y is equal to 15000 and 28x minus 12y is equal to 20,000. So subtracting, so माइनस x हो जाएगा, ये तो y तो एलिमिनेटिव हो जाएगा और माइनस 5000. सो x इज इक्वल टू 5000. सो फर्स्ट का जो सेविंग है वो है रुपीज 9x. सेविंग नहीं, फर्स्ट का जो इनकम, फर्स्ट पर्सन का जो इनकम है वो 9x है, तो मतलब 9 इंटू 5000, सो रुपीज 45,000. ये फर्स्ट जो पर्सन है उसका इनकम है, एंड सेकेंड पर्सन का इनकम रुपीज 7x, 7 इंटू 35,000. Now putting value of x in equation 1. So in equation 1, 5,000, 4y is equal to 5,000. So 45,000, 4y is equal to 5,000. So 4y is equal to 40,000. Okay. So y is equal to 10,000. So फर्स्ट जो पर्सन है उसका सेविंग क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है फर्स्ट पर्सन का 4y, so 40,000 रुपीज, एंड सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है 3y, 30,000 रुपीज. ओके. सो hence their respectively monthly income. So monthly income तो हम लोगों को मिल ही गया, मंथली इनकम तो मिल ही गया,
एंड मंथली एक्सपेंडिचर मिल गया और सेविंग्स भी तो मिल गया, दोनों का सेविंग्स, मतलब फर्स्ट पर्सन का सेविंग्स भी 5000 और सेकंड पर्सन का सेविंग्स भी 5000 है। ओके, सो इनकम हम लोगों को निकालने के लिए बोला है, इनकम, दोनों का इनकम क्या है, सो इन दोनों की इनकम ये आंसर है। प्रूव दैट सेकंड सम बिलोंग्स टू, अच्छा, दिस सम वाज फ्रॉम linear simultaneous equation, what problem tha, and after that this sum belongs to trigonometric identities, so we have to prove that cos a plus sin a minus 1 by cos a minus sin a plus 1 is equal to cosec a minus cot a. So LHS cos a plus sin a minus 1 by cos a minus sin a plus 1. So from both numerator and denominator I am going to take sin x as common. Okay, sin a, sorry a, so ये cot a हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन ए मतलब कोसेक ए हो जाएगा। नीचे से अगर हम साइन एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए मतलब कॉट ए प्लस, सॉरी माइनस है, साइन एक्स से साइन ए से साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 ही हो जाता है, प्लस 1 बाई साइन ए मतलब कोसेक ए। So sin A will be eliminated from both numerator and denominator. So cot A plus minus cot A minus cosec A plus 1 and इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, cot A plus cosec A minus 1. सो ऊपर में जो 1 है, न्यूमरेटर में जो 1 है, उस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस अगर ये लिख दोगे तो हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज जाएगा, मतलब वो अनचेंज रहेगा, उसका ऐसे ही छोड़ दो। ओके, सो कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें डाल देना पड़ेगा। सो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कोसेक ए प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, ओके, बाई नीचे वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, अनचेंज ही रहेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। सो ऊपर से हम लोग अगर कॉट ए माइनस कोसेक से कॉमन लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, सो कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस, यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखो कॉट ए माइनस कोसेक ए हो गया, और ये वाला जो है वो एज इट इज रहेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे वाला पोर्शन जो एक्सप्रेशन है वो भी एज इट इज रहेगा। सो ऊपर से कॉमन लेंगे हम लोग, क्या क्या कॉमन जाएगा ऊपर से, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये कॉमन चला जाएगा ऊपर से,
मतलब न्यूमरेटर से, सो कॉमन जाएगा तो -1 रह जाएगा, माइनस ये वाला रह जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नीचे क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए -1। सो ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे और यहां से भी अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, वो माइनस हाथ में रख दो और यहां से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए -1। सो इसमें से जो माइनस हम लोग कॉमन लिया और उसमें से जो इस एक्सप्रेशन में से जो माइनस हम लोग कॉमन लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, दोनों तो मल्टीपल फॉर्म ही है, मल्टीप्लाइड फॉर्म ही है, तो करने से प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और नीचे क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए -1। सो फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 will be eliminated. Okay, so the result is after elimination, cosec a minus cot a, so RHS। ये वाला हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, तो प्रूफ कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट सम, इफ ए भी ट्रिग्नोमेट्री का सम है, सो LHS क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो वैल्यू बैठा दो, पी स्क्वायर का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा है प्लस कॉस थीटा, ओके, उसका होल स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो एक्सपैंड कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। सो ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। सो 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। सो cot square theta will be eliminated. Cos square theta and cos square theta is being eliminated. So 2 cot theta cos theta plus 2 cot theta cos theta मतलब 4 cot theta cos theta. Now we can write 4 into root over of cos square theta into cos square theta. Okay, हम लोग लिख सकते हैं, ये तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर उठा दो तो रूट ओवर टूट जाएगा। सो नाउ यहां से cos स्क्वायर का मतलब क्या है, cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक काम करो, cos स्क्वायर की जगह पे ये वाला तो लिख दिया हम लोग, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके ओके, सो इंस्टेड ऑफ cos स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो
4 into root over of cos square theta by sin square theta minus cos square theta. Okay, so now 4 into root over of cos square theta minus cos square theta. So फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पर. सो 4 इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब cot थीटा प्लस cos थीटा इंटू cot थीटा माइनस cos थीटा. सो the value of cot theta plus cos theta is p into the value of cot theta minus cos theta is q. So p into root over of pq, root over of pq is equal to RHS. This is the right hand side. Proved. Okay. Next sum. So I am taking break for few minutes. Now we are starting next session, that is based on ICSE class 10. So we are going to solve 10 questions from section B for class 10 ICSE. So the first questions from section B for ICSE class 10. So solve the following quadratic equation, give your answer correct to 3 significant figure. मतलब पॉइंट के बाद मतलब 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोगों को लेना पड़ेगा. डिजिट 3 डेसिमल पॉइंट के बाद तीनों डिजिट लेना पड़ेगा और ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीधा आचार्य फॉर्मूला. ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस बी. सो माइनस बी मतलब माइनस, यहां पर b ए क्या है 2 है, b क्या है -5 एंड c क्या है -4. सो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, b मतलब 525. ओके, -4ac, 4 इंटू ए मतलब क्या है 2 इंटू सी मतलब क्या है -4 बाई 2a, 2 इंटू 2. So 5 plus root over of 25 plus 32
4. So 5 plus root over 57 by 4. So 5 plus minus 7.549, मतलब रूट ओवर 57 अगर आप लोग रूट ओवर निकालोगे तो 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 7.549 ही होगा. So taking positive value 5 plus 7 by 4 क्या होगा 12.549 by 4, that is equivalent to 3.137, approximate यही होगा 3.137. and if we are taking negative value, so क्या होगा 7.549 minus 5. so minus 5 अगर लेंगे तो 0.549 ही आएगा. 2 पॉइंट मतलब ये होगा माइनस हो जाएगा. ओके, माइनस 6.37 पॉइंट. ओके, अप्रोक्सीमेट यही आएगा वैल्यू. अब लोग कर लेंगे, कर लो. तो नियर अबाउट 3 डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद तीनों डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद तीनों डिजिट तक ले आना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू निकल आएगा. ठीक है. सो दिस इज द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन banking. So Mr. Rao deposited 250 per month, that is principal. So PRINCPLE, principal P, that is rupees 250 per month in a recurring deposit account for a period of 3 years. So period कितना होगा PERIOD, period is equal to period को n पकड़ लेते हैं हम लोग. स्पेशली period is denoted by n. So n is equal to, इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3 years है, 3 years मतलब कितना मंथ 36 मंथ, 3 into 12 month. So 36 month, that is the period, that is denoted by period. And mature value MV, that is given 10,000 rupees, 10,000, 1100 and 10,110. Okay. And now we are asked to find out the interest. So what we know now, MV, mature value, is equal to P into N plus I. Okay, P into N plus I. So I का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट क्या होता है P into N into N plus 1 by 2 into 12 into R by 100. R मतलब rate of interest. Okay. So this is the formula. Now putting value, MB मतलब 110 is equal to P into N मतलब 250, P मतलब 250, N मतलब 36 plus P into N 250 into 36, okay, into 37 by 24 into R by 100. So 250 into 36 मतलब 9,000, and 9,000 is taken common. So 1 plus
37 by 24 into R by 100. So So 10110 minus 9000. So 0111. So 11110 is equal to 1 plus, sorry, extremely sorry, एक काम करते हैं, ओके ये छोड़ देते हैं, 1 प्लस 37 बाई 24, ये भी एक कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 9000 हो जाएगा, सॉरी ये वाला 0 हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। सो ये वाला तो यही था और कॉमन लेने से 9000 हो गया था, सो बाई 9000 कर दिया, ओके। सो ये वाला कट जाएगा, सो ऊपर में क्या है 10, न्यूमरेटर में 1011 और नीचे 900 माइनस 1 कर देते हैं, इधर ले आते हैं, तो 37 बाई 24 इंटू R बाई 100, ओके। सो अभी वन वन 900, so 111, so 1011 minus 900 by 900 is equal to 37 by 24 into R by, यहां से 100 दोनों शून्य कट जाएगा, सो ऊपर में क्या है, ऊपर आ जाएगा 111 by 9 is equal to 37 by 24 into R. So R is equal to 111 into 24 by 9 into 37, 8 हो जाएगा एंड 3 तो 3 कट जाएगा, so 8% is equal to rate of interest 8%, okay. So rate of interest 8%. Now coming to the second part of this sum, how much more interest Mr. Rao will receive if she had deposited 50 more per month. So now अभी सेकेंड पार्ट में जो प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल क्या होगा, नया प्रिंसिपल होगा ₹250, पहले था 250, उसके बाद 50 ऐड हो रहा है पर मंथ, प्लस 50 कर दे रहा हूं, सो 50 करने से ऐड करने से 300, सो नया प्रिंसिपल क्या है 300 रुपीज, 300 नया प्रिंसिपल क्या है 300 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, पीरियड 36 ही रहेगा, सो अभी हम लोगों को क्या निकलना पड़ेगा, हम लोगों को इंटरेस्ट निकलना पड़ेगा, सो हाउ मच मोर इंटरेस्ट, तो आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू
R by hundreds. This is the formula of finding interest in recurring deposit sum. इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वाला सम में जो होता है वो इंटरेस्ट ऐसा ही होता है. सो P मतलब 300, N मतलब 36 इंटू 37, N प्लस 1 36 प्लस 1 37 होता है, 2 इंटू 12, R मतलब 8 बाई 100. सो कट जाएगा 4 2 2. सो 37 इंटू 36 2 3 3 1. सो रुपीज आई क्या निकला, रुपीज 1332. सो पहले इंटरेस्ट क्या था, पहले इंटरेस्ट था, पहले वाला क्या इंटरेस्ट था, पहले वाला इंटरेस्ट था 10110 माइनस 9000. सो 1110 था पहले वाला इंटरेस्ट. सो अभी का इंटरेस्ट क्या है 1332. तो ज्यादा हुआ, तो कितना ज्यादा हुआ 1332 माइनस 110. सो 222 सो इतना ज्यादा हुआ. अभी जो अभी तक जो अभी नया जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ज्यादा है पहले से. कितना ज्यादा है 222 मतलब 222. नेक्स्ट सम, ये वाला सम बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, ट्राइंगल का सम है, सिमिलर ट्राइंगल का सम है. तो फर्स्ट प्रूफ क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा ना, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AED. सो ये वाला एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री. सो एंगल E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एंगल B एंड ये कॉमन एंगल के मतलब इस ट्राइंगल का A है, बस अगेन इस ट्राइंगल का भी A है. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. सो सिमिलर प्रूफ हो गया. सो एंगल एंगल एक्सियम अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल एक्सियम. सो सिमिलर प्रूफ हो गया. अगर सिमिलर जब प्रूफ हो गया मतलब AED एंड इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, स्प्लिट करके लिख रहा हूं ABC. सो तब जाके द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल. सो AE बाई इस ट्रायंगल का E बाई AB इज इक्वल टू ED, इस ट्रायंगल का साइड ED इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड BC होता है, BC होगा और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC होगा. सो AD इज इक्वल टू सॉरी AD बाई AC. सो दोनों ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उसका रेशियो इक्वल होता है. ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी होता है. तो नाउ अब AE मतलब क्या है, AE का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है तो AE रख देते हैं. AE बाई AB का वैल्यू क्या है, AB का 20 इट इज गिवन 20 इज इक्वल टू ED का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 3 है, ED का वैल्यू 3 है. हाँ ED का वैल्यू 3 है एंड BC का वैल्यू और BC का वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोगों को. कैसे ना, बाय द हेल्प ऑफ पिथागोरस थ्योरम. सो बाय द हेल्प ऑफ पिथागोरस थ्योरम व्हाट we can write now, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मैंने AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मतलब अल्टीट्यूड स्क्वायर. सो AC स्क्वायर मतलब 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो that we have to find it out. प्लस AB स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर. सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. 25 स्क्वायर मतलब 625 माइनस 400. सो सबसे पहले 225 हो जाएगा. सो BC इज इक्वल टू रूट ओवर 225 मीन्स 15. ओके. सो BC मतलब 15 सेंटीमीटर. सो 15 एंड AD मतलब AD this is also unknown to us and that we have to find it out. So AD as it is वो भी निकलना पड़ेगा. एंड AC तो 25 दिया हुआ ही है. सो दोनों को इक्वल कर देते हैं इस दोनों को. सो AD यहां से निकल आएगा. AD इज इक्वल टू कितना है मतलब अगर इस दोनों को इक्वल करेंगे सो AD बाई 25 इज इक्वल टू 3 बाई 15. सो 5 हो जाएगा 5. सो AD इज इक्वल टू 5. AD वैल्यू फाइंड ऑफ लेंथ AD 5 होगा. ओके. सो अब दोनों को इस दोनों को इक्वल कर देते हैं. AE बाई 20 इज इक्वल टू 3 बाई 15. सो 5 कट जाएगा 4. सो AE इज इक्वल टू 4. सो AE 4 होगा. BC 15 होगा. ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस सम. So scale factor of math k square is equal to area of plot. area of the plot क्या है BC ED and area of actual ground. ठीक है. सो स्केल फैक्टर ऑफ मैथ k स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला स्केल फैक्टर का जो एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला स्केल फैक्टर. सो एरिया ऑफ BCED and divided by area of actual ground. So area of actual ground is given, that is कितना है 576 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ BCED. सो BCED मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से अगर हम ट्राइंगल ADE सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ही हम लोगों को क्या मिलेगा BCED का एरिया मिलेगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस क्या है ABC हाफ इंटू बेस मतलब 15 इंटू हाइट क्या है 20 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मतलब ये 15 है. अच्छा ये 3 है और हम लोगों को क्या मिला है मतलब AC मिल गया. AC तो 15 है. अच्छा ये 3 है और ये क्या निकलेगा और हाँ ये तो 90 डिग्री है तो जाके AE क्या है AE तो 4 है हाफ इंटू बेस AE 4 है इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है AD का वैल्यू 5 है. ठीक है. सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये तो सेंटीमीटर में है, बाय 576 मीटर स्क्वायर, सो 10 2 is equal to 150 minus 10 centimeter square by 576 meter square, so 140,576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर में ले आना पड़ेगा तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, सो सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 2 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 से अगर 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 576 14, सो ए बी सी बेस है, ठीक है, टोटल से ए डी ई, मतलब ए तो 4 निकल आया, ठीक है, इंटू ए डी ठीक ही है, 4 ही है, इंटू 5 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाफ इंटू ये हाइट होगा, बेस है, हाफ इंटू बेस 4 है ए ई एंड हाइट होगा 3 होगा, ये 6 होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 6 होगा, मतलब ए डी हाफ इंटू बेस मतलब ए ई 4 एंड हाइट इज 3 होगा ये, सॉरी स्टूडेंट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, सो 6 हो जाएगा ये, सो क्या होगा 4 ओके, सो 4 हो जाएगा, सो अगर कट जाएगा 4 से, ओके, सो देयरफॉर k is equal to root over of plus minus 1/4 into, so scale factor is plus minus 1/, इसके लिए 200, ये होगा 1/200 प्लस माइनस स्केल फैक्टर 1/200 होगा, ठीक है, 1/200 इसका स्केल फैक्टर। नेक्स्ट सम, यूजिंग रूलर एंड कॉम्पस फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, अच्छा फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए बी लाइन मेजरिंग 6 सेंटीमीटर, ओके, ये 6 सेंटीमीटर, उसके बाद इस पॉइंट से with the help of pencil compass we have to draw 120 डिग्री, सो ये 60 एंड ये वाला 60, सो ये 120 डिग्री हो गया, ओके क्लियर। सो ए से हम लोग इस लाइन सेगमेंट से एसी कट लेंगे, इसी का मेजरमेंट लेके 4.5, सपोज ये 4.5 है,
मतलब ये C, इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो ये हो गया ट्राइंगल, ये 6 है। अब सर्कम सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसका। ओके, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ से मीट कर रहा है। सो अब ज्वाइन कर दो सी। तो ओ सी को रेडियस लेके हम लोग अगर तो सर्कल ओ को सेंटर करके ओ को सेंटर पकड़ के एंड ओ सी को रेडियस पकड़ के हम लोग अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल तीनों पॉइंट से ही जाएगा। मतलब ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर तो रफ ड्राइंग हो रहा है, मतलब ऐसे। दिस इज अ स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप वी हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल इन व्हिच AB is 6 centimeter. After that we have to draw an angle whose measurement is 120 degree. So how to draw 120 degree, that we have already learned in class 8. So it need not to say about all that. So 120 degree angle is drawn. After that, from this arm we have to cut measuring. We have to cut the line whose measure is 4.5 centimeter. Now join C and B. So this is the required triangle. Now if we are asked to find out the if we are asked to draw the circumcircle, then first of all any two sides we have to draw a perpendicular bisector of any two sides of the triangle. So first of all I have drawn perpendicular bisector of line AB. After that I have drawn perpendicular bisector of line AC, and two perpendicular bisector line meet at the point O. Now joining O and C, so taking O as center and measuring OC as a radius, if we draw a circle, then the circle must pass through 3 points of the triangle, and that is the circumcircle of the triangle ABC. Okay, now let's a matrix, two matrices are given, A and B and C. Sorry, three matrices are given. So now we have to find out A plus C. So A plus C, A matrix 1 2 3 4 plus B matrix, sorry C matrix क्या है? -5 1 by -5 1 7 -4. So we have to add two matrices, just their corresponding elements. So 1 plus this matlab -4 3 10 0. So this is the required answer first. And B into A plus C. B matrix क्या है? B matrix है 2 1 4 2 into A plus C, that we have found it out previous few minutes ago we have found this A plus C, that is -4 3 10 0. So multiplying two matrix, so this into this, -8 plus 10, and this into this 6 plus 0, and this into this 4 into 4 -16 plus 20, and this into this 12 plus 0. So second answer is last sum for the day, because we are getting very late. So after that, in my next class I will discuss new sum along with these sums. Okay, this pending sums. So 4
सॉरी 6 सो इतना था कि हम लोग आज करके छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहां से ही शुरू होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, गुड नाइट। করে দিচ্ছি।